Hello and welcome. Welcome to learning session number 2 of chapter number 2 of science 1, which is called periodic classification of elements. Okay, so far in this chapter, what have we seen? We have seen Doberener's triad. So, what did Doberener do? He made groups of three elements. That why it is called triad. Tri matlab three. Okay, he made groups of three elements having similar properties. And what he found was if you take the mean of the highest atomic mass within those three elements and the lowest atomic mass within those three elements and take the mean of both of them, then you get the atomic mass of the middle element. Okay, so that was Doberener's triads. Today what we're going to see, we're going to see Newland's law of octaves, and we are going to see Mendeleev's periodic table. Okay, these two things we're going to discuss today. The new word we're going to learn today is correlate. Okay, so let us begin with Newland's law of octaves. So the English scientist matlab he was born in England. Okay, that's why he's called English. This is a person who's born in India is called as Indian. A person who's born in England is called as English. Okay, so the English scientist John Newlands correlated the atomic masses. Correlated matlab correlated किसके बीच में correlation हो रहा है? Let us try to guess. Okay, atomic masses and the atomic masses of elements and their properties in a different. Correlated का क्या मतलब हो सकता है? Correlated atomic masses and their properties means there is some relation. Okay, there is some relation or there is some connection between the two. Okay, that is the meaning of the word correlated. कोई connection है. So English scientist John Newlands correlated the atomic masses of elements to their properties in a different way. Okay, कैसे different था? In year 1866. Now the timelines are interesting. Okay, Dobereiner did his discovery around 1800s, right? Up say more than a little more than 200 years from now. Okay, this person Newlands did this discovery or did this study in 1866, which is around 60 years after Dobereiner. So Dobereiner के 60 साल के बाद ये नया concept scientist लेके आ रहा. Okay. So Newlands arranged the elements known at that time in increasing order of atomic masses. Okay, तो उसने क्या किया? उस टाइम तक जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज कर दिया. It started with the lightest element hydrogen and ended up with thorium. He began with hydrogen, फिर बाद में उसके बाद नेक्स्ट किसका एटॉमिक नंबर आता है ज्यादा, उसके बाद ज्यादा किसका है. So he started arranging. He started with lightest सबसे हल्का hydrogen and ended with thorium. वो सबसे heavy element was the most heavy element known at that time was thorium. Okay. He found that every eighth element has properties similar to those of the first. Okay, so when he arranged that, what he found, eighth जो element होगा वो हमेशा property will be similar to the first one. Similarly, ninth जो होगा उसका property will be similar to second. 10th जो होगा उसका property will be similar to third, so on and so forth. Okay, so 8 elements के बाद जो कोई भी element आने वाला है ऐसा arrange करने के बाद उसका property same होने वाला है. That's what he found. So ऐसा और कहाँ पे होता है जहाँ पे eighth चीज similar to the first thing, वो शुरू में होता है, right? So if you see here, I have put a picture of musical notes. और musical notes की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है? एलिमेंट्स के नाम लिखा है. Why? Because Newland's octaves, again octaves का मतलब क्या है? ऊपर वाला नोट, right? So Newland's का जो law of octaves है, that is basically law of octaves from music. So music में नीचे का सा ऊपर का सा they sound very similar. Okay, so now be ready for my besura awaz. Okay, I'm going to sing now and I'm going to show you all how दो सुर similar sound कर सकते हैं. Okay, so I'm going to start with sa, then I'll go from sa re ga ma pa da ni and वापस मैं ऊपर वाला सा गाऊंगा. So नीचे वाला सा ऊपर वाला सा दोनों similar sound करेंगे. Okay, sa re ga ma pa dha ni sa. सो नीचे वाला सा और ऊपर वाला सा, ये दोनों सा में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है. व्हाट इज दैट सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी क्यों आ रही है? बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ नीचे वाला सा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऊपर वाला सा इज डबल. सो अगर नीचे वाले सा का फ्रीक्वेंसी है से फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? हर्ट्ज. सो नीचे वाले सा का अगर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज तो ऊपर वाले सा का फ्रीक्वेंसी, अगेन साउंड इज अ वेव, राइट? सो वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, तो ऊपर वाले सा का डबल हो जाएगा, 100 का डबल 200. ओके, so that's the concept from music जो यहाँ पे apply कर दिया है न्यूलैंड्स ने in elements. Okay, great. So let us move ahead.
सो एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम इज द एथ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. सो इफ यू सी यहाँ पे, यू कैन सी इन दिस टेबल द म्यूजिकल नोट यहाँ पे लिखा है, देखो सा रे ग म प ध नी सा. उसके ऊपर क्या लिखा है? डो रे मी फा सो ला टी. सो बेसिकली डो रे मी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में सारे गम पे है. ओके, सो इंडियन क्लासिकल में सारे गम प होता है, वैसे ही वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी होता है, उसमें डो रे मी फा सो ला टी होता है. ओके, सो इट्स द सेम थिंग. सो म्यूजिकल नोट सारे गम प ध नी सा के सारे के जैसे है. एंड नी के बाद वापस एक सा आता है, राइट? वो जो नी के बाद सा आएगा वो वापस इसके नीचे लिख लिख दिया जाएगा. सो स्टार्टेड विद हाइड्रोजन. सो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना चाहिए, राइट? हाइड्रोजन के बाद हीलियम आना चाहिए. यहाँ पे लिथियम क्यों लिखा है, राइट? हम लोगों ने कैसे याद किया? हाई हेलो लिसन बीबीसी न्यूज, राइट? सो हाई इज हाइड्रोजन, हेलो इज हीलियम, एच ई. यहाँ पे हीलियम दिख नहीं रहा है. वाई इज दैट? द रीजन इज ये 1866 में ये स्टडी हो रही थी, राइट? सो 1866 तक हीलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, इसलिए हीलियम तुम लोग को यहाँ पे नहीं दिखेगा. ओके, सो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम पता था, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन आ गया. सो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स थोड़े से सिमिलर है, तो हाइड्रोजन के नीचे लिख दिया. सिमिलरली उसके बाद आगे चले गए, आगे चले गए, आगे चले गए, वापस क्लोरीन आ गया. नाउ अगेन फ्लोरीन एंड क्लोरीन का प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर है, तो उसको सेम में लिख दिया. ओके, सो ऐसे सब में हो रहा है. सो लिथियम सोडियम पोटेशियम थोड़े बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज है. कार्बन सिलिकॉन टाइटेनियम वेरी मच सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो सब कुछ एक में आ रहा है, एक कॉलम में आ रहा है. सो एग्जांपल में क्या दिया? सोडियम इज द एथ एलिमेंट. सो सोडियम यहाँ पे है एथ एलिमेंट फ्रॉम लिथियम. सो लिथियम से काउंट करना शुरू करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना. एथ वाला कौन सा आ गया? सोडियम आ गया. लिथियम से काउंट करना स्टार्ट किया, एथ वाला सोडियम आ गया. तो दोनों के सेम प्रॉपर्टीज है, तो वो लोग सेम कॉलम में आ गए. ओके, नेक्स्ट मैग्नीशियम shows similarity to beryllium and chlorine. Sorry, magnesium shows similarity to beryllium. So where is magnesium? यहाँ पे magnesium shows similarity to beryllium, तो एक ही कॉलम में आ गया. And chlorine shows similarity with fluorine. So again chlorine यहाँ पे, fluorine यहाँ पे, वो लोग दोनों भी सिमिलर है, तो सब सेम कॉलम में आ रहे हैं. सो व्हाट इट मींस इज न्यूलैंड ने जो ये मेथड निकाला है अरेंज करने का एलिमेंट्स को, वर्क कर रहा है, क्योंकि सब चीज सब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक ही कॉलम में आ रहा है. इट मींस इट्स बेटर, राइट? पिछले वाले से अच्छा था ये. नेक्स्ट, Newland compared this similarity with octaves in music. He called the similarities observed in eighth and the first element as law of octaves. Okay, so ये जो law of octaves है, जो first and eighth चीज सिमिलर होंगी, वो बेसिकली म्यूजिक से आता है. ओके, सो म्यूजिक में नीचे वाला सा और ऊपर वाला सा. ओके, ये दोनों सिमिलर होते हैं. उसी तरह से यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट हमेशा सिमिलर होगा. इसको उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन objective types. What is Newland's law of octaves? So the similarity observed in eighth and the first element when they were arranged in increasing order of atomic masses. ये यहाँ पे नहीं लिखा है, ये तुम लोग खुद से ऐड करना पड़ेगा. Okay, the similarity observed in eighth and the first element when elements were arranged in increasing order of atomic masses uh, is known as law of octaves. Okay, and यहाँ पे पूरा टेबल तुम लोग देख सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स? कुछ तो प्रॉब्लम भी होंगे, राइट? क्या प्रॉब्लम्स है इसमें? जैसे हम लोग ने देखा था डोबेलिनस में भी प्रॉब्लम थे कि सारे के सारे एलिमेंट्स अरेंज नहीं हो रहे थे ट्रायड्स में. सो ऐसे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स के कुछ लिमिटेशंस यानी कुछ प्रॉब्लम्स है क्या? ओके, सो दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम. कैल्शियम तक ही ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, एथ वाला जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होगा, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही हो रहा था, उसके आगे नहीं हो रहा था. ओके, न्यूलैंड्स फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट्स इन अ टेबल ऑफ 7/8. सो 7 सुर है, तो 7 कॉलम्स बन गए एंड 8 8 रोज है. ओके, सो 7 6 56 बॉक्सेस बन गए थे. न्यूलैंड्स प्लेस 2 एलिमेंट्स ईच इन सेम बॉक्सेस टू अकोमोडेट ऑल नोन एलिमेंट्स इन द टेबल. तो एक क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि कहाँ पे तो कहीं कहीं पे तो दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में डाल दिया. सो इफ यू सी सा के नीचे, ओके, द फर्स्ट कॉलम सा के नीचे क्लोरीन के नीचे कोबाल्ट और निकल. CO इज कोबाल्ट, Ni इज निकल. कोबाल्ट एंड निकल आर इन द
सेम बॉक्स, इवन सा रे ग म पे जाओ, म वाले कॉलम में जो लास्ट है सीई एंड एल ए, अगेन बोथ दीज एलिमेंट्स आर बीइंग प्लेस्ड इन द सेम बॉक्स, दैट इज वन प्रॉब्लम. ओके, सो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल कोबाल्ट एंड निकल एक सेम बॉक्स में डाला है एंड सीई एल ए सेम बॉक्स में डाल दिया. ओके, नेक्स्ट, moreover, he placed some elements with different properties under the same note in the octave. कहीं कहीं पे तो ऐसा हो रहा है कि सेम नोट के अंदर या फिर सेम कॉलम के अंदर आ रहे कुछ एलिमेंट्स बट उनमें कुछ कॉमन है नहीं. एग्जाम्पल क्या दिया है, कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट एंड निकल आर प्लेस्ड अंडर द नोट डो, डो यानी सा के नीचे कोबाल्ट और निकल रखा है, राइट. यहाँ पे सा के नीचे फोर्थ वाला जो एलिमेंट है दैट इज कोबाल्ट एंड निकल. while Fe क्या है, आयन, Fe is iron having similar properties to cobalt and nickel. आयन, कोबाल्ट, निकल तीनों के प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सिमिलर है, बट कोबाल्ट एंड निकल यहाँ सा के नीचे आ रहा है एंड आयन Fe यहाँ पे नी के नीचे आ रहा है, तो सा नी थोड़ा दूर हो गया, राइट. आयन, कोबाल्ट, निकल तीनों साथ में होने चाहिए क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज तो वेरी काफी सिमिलर है. Okay, so these are the limitations of Newland's octaves. Okay, questions from this particular chapter, many of the questions come in the form of Dobrinus triads के advantages बताओ, Dobrinus triads के disadvantages बताओ, Newland's law of octaves के advantages, disadvantages. तो सबके advantages, disadvantages you all should know by heart. Okay, because it's one of the more likely questions to be asked in the board exams. Okay, next. Also, Newlands did not have provision to accommodate the newly discovered elements. तो मैंने क्या बोला था, 1866 में हो रहा है, तो अभी 1866 में सारे एलिमेंट्स तो पता है नहीं, हर 2-4 साल में एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो रहा है. सो अभी समझो एक नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो इस टेबल में उसकी कहीं पे जगह नहीं है. सो अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो गया, देयर इज नो वे टू पुट those new elements in this within this existing table. That was one problem. Okay, the properties of the new elements discovered later did not fit in Newland's लॉ ऑफ ऑक्टेव. जो बाद में नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होने लग गए, यहाँ पे ठीक से फिट नहीं हुए. दैट इज अनदर लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ओके, नाउ वी गोइंग टू मूव अहेड to Mendeleev's periodic table. Okay, so how do you pronounce this word? This is the name of the scientist. Okay, Men is men, D is day, Leev is lev, Mendeleev. Okay, so the Russian scientist Dmitry Mendeleev developed the periodic table of elements during period 1869 to 1872. Okay, so 3 साल लग गए उसको इस periodic table बनाने के लिए. And again remember the timeline. डोबेरेनियस ने 1800s में चालू किया था, फिर न्यूलैंड्स ने अराउंड 1866 में किया, एंड नाउ जस्ट आफ्टर 3-4 years मेंडेलीव डिड इट इन अराउंड 1870. ओके, सो मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. मेंडेलीव का जो क्लासिफिकेशन था वो इतना अच्छा था कि इट्स रिगार्डेड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड वेरी फंडामेंटल स्टेप्स in arranging the or classifying the elements. Again, let me remind yourself, let me remind you all, why are we doing this? ये arrange करना इतना important क्यों है? I told you all, right? जब तक हम लोग numbers को बहुत अच्छे से arrange करके नहीं रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 20 30 31 32 33 40, so जैसे जब तुम अच्छे से अरेंज करके रखोगे तब तुम लोग को पैटर्न्स दिखने लग जाएंगे, एंड देन डूइंग केमिस्ट्री बिकम्स इजी. अगर सब कुछ ऐसी एक एक चीज यहाँ पे रखी है, किसका कुछ कनेक्शन क्या बन रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू केमिस्ट्री, राइट. दैट इज व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट स्टेप. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू क्लासिफाई थिंग्स. इवन इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी क्लासिफाई करते हैं, राइट, कि कौन सा स्पीशीज है, कौन सा क्लासिफिकेशन है, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट उसको स्टडी करना इजी हो जाता है. दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स वेरी वेल, सो दैट केमिस्ट्री थोड़ा इजी हो जाए. सो मेंडेलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया उससे काफी फर्क पड़ा केमिस्ट्री में. ओके, एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्लासिफाइंग. ओके, Mendeleev considered the fundamental property of elements, namely the atomic mass, as standard and arranged 63 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. Okay, so सबसे again it was a long sentence, so let me break that down. What is considered as fundamental property? Fundamental यानी एकदम बेसिक चीज क्या है किसी भी एलिमेंट की? एटॉमिक मास. कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेंडलीव बोल रहा है. ओके,
सो मेंडलीव ने सोचा एटॉमिक मास सबसे फंडामेंटल चीज है एक एलिमेंट की, तो उसने भी अरेंज कर दिया। उसके टाइम पे 63 एलिमेंट्स पता थे, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ओके, सो ये दिस हैज बीन डन बाय सो मेनी अदर पीपल, राइट? डोबेरेनर डिड अ वेरी सिमिलर थिंग एंड न्यूलैंड्स आल्सो डिड अ वेरी सिमिलर थिंग। सो इसने ऐसा क्या अलग किया, इसने ऐसा क्या अलग किया जिसकी वजह से इसका स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है? That's given in the next point. Then he transformed this into periodic table of elements in accordance with the physical and chemical properties of these elements. Okay, तो ये जो second step है, इससे पूरा गेम चेंज हो जाता है। That was a game changer, और इसके वजह से ही पूरा फर्क पड़ने लग जाता है उस टेबल में। ओके, what did he do? He transformed this increasing order, जो अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में एलिमेंट्स को, उसको ट्रांसफॉर्म किया एक टेबल में, और टेबल में उसने क्या कंसिडर किया? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उन एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी उसने कंसिडर किया। ओके, अब तक के जो साइंटिस्ट क्लासिफाई कर रहे थे, दे आर नॉट टेकिंग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इनटू कंसिडरेशन। ओके, and for that you need lot of knowledge about the physical and chemical properties of elements। तभी गूगल नहीं हुआ करता था, तो तुम लोग ऐसे गूगल पे सर्च मारोगे, अच्छा इस एलिमेंट का क्या प्रॉपर्टी है, क्या डेंसिटी है, क्या वेट है, और तुम लोग को मिल जाएगा आंसर। यू हैड तभी इंफॉर्मेशन इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं था, सो यू नीड लॉट ऑफ नॉलेज टू डू दिस, टू डू सच अ थिंग। ओके, so Mendeleev organized the periodic table on the basis of chemical and physical properties of these elements। तो अभी कौन से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है? सो नेक्स्ट पॉइंट में दिया, दीज वर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ हाइड्राइड्स। व्हाट आर हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद जो फॉर्मूला बनेगा, जो केमिकल बनेगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड। देन ऑक्साइड्स, व्हाट इज ऑक्साइड? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद कौन सा केमिकल बनेगा? दैट्स ऑक्साइड्स। ओके, सो कौन से हाइड्राइड्स बन रहे हैं, कौन से ऑक्साइड्स बन रहे हैं उस एलिमेंट के? व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट एलिमेंट? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट एलिमेंट? उसका डेंसिटी क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, सो ये सारी चीजें उसने कंसिडर किया है। ऑल्सो लास्ट थिंग आई थिंक आई फॉरगॉट टू रीड, डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड। सो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या डेंसिटी होगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद क्या डेंसिटी होगा, क्या मेल्टिंग पॉइंट होगा? ऑल दिस थिंग्स ही हैज कंसीडर्ड व्हाइल मेकिंग दिस टेबल। ओके, Mendeleev found out that the elements with similar physical and chemical properties repeat after a definite interval। So again, it's very similar to Newland's octaves। Newland's octaves में भी काफी सिमिलर चीज हो रही है। उसने अरेंज करना स्टार्ट किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज करने के बाद न्यूलैंड्स ने बोला कि एवरी एथ एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। बट यहाँ पे एथ एलिमेंट ऐसा नहीं बोला। ओके, मेंडलीव इज नॉट सेइंग कि एथ एलिमेंट ही होना चाहिए। मेंडलीव जस्ट इज सेइंग कोई ना कोई डेफिनेट इंटरवल में तुम लोग ऐसे अरेंज करने के बाद कहीं ना कहीं पे तक पहुंचने के बाद यू विल फाइंड कि अच्छा इस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर टू द प्रीवियस एलिमेंट्स। ओके, और ऐसा बार बार होते रहेगा। ओके, डेफिनेट इंटरवल यानी हर छोटे छोटे इंटरवल में ऐसा होते रहेगा, रिपीट होते रहेगा ये। On the basis of this finding, Mendeleev started following periodic law। Okay, so इसके इसके आधार पे, बेसिस पे, इस आधार पे Mendeleev has found a law, and what does the law say? मैंने अलग कलर में नीचे लिखा है। Again, very important for you to remember this law। Okay, properties of elements are periodic function of their atomic masses। Properties of elements are periodic function of their atomic masses का मतलब क्या है? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग तुम लोग अरेंज करोगे तो हर थोड़े एलिमेंट्स के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी पहले वाले एलिमेंट्स के। तो इसको अच्छे इंग्लिश में कैसे लिखोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन में हर थोड़े टाइम पे कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी मिलेगी। किसके अकॉर्डिंग अरेंज करो? एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज करोगे तब। ओके, सो दैट्स Mendeleev's law of Mendeleev's periodic law। Okay, so this is how the table looks। Okay, so यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोज है उसको दे आर कॉल्ड एज पीरियड्स। ओके, क्योंकि पीरियोडिक इंटरवल्स में रिपीट हो रहा है, राइट? इसलिए उसको पीरियड्स बोलते हैं। सो दिस विल बी फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो रोज विल बी कॉल्ड एज पीरियड्स, व्हेयरएज कॉलम्स को बोल रहे हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। ओके, सो ग्रुप वन में जितने भी एलिमेंट्स है सेम प्रॉपर्टीज, नॉट सेम, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ग्रुप टू में जितने भी एलिमेंट्स है देयर विल बी सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वर्टिकल वी विल कॉल एज ग्रुप, हॉरिजॉन्टल वी विल कॉल एज
periods. Again, one thing to notice, group के numbers देखो कैसे लिखे, there's always written in Roman numericals. Okay, सो ग्रुप वन को रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखा है, टू को रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखा है. सो ग्रुप का जो नंबर होगा दैट इज ऑलवेज रिटन इन न्यूमेरिकल, सॉरी, रोमन न्यूमेरिकल्स. ओके, दे आर ऑलवेज रिटन इन रोमन न्यूमेरिकल्स. देन अनदर थिंग टू नोटिस, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर ओ, आर ओ, आर स्क्वायर ओ क्यूब. so दिस इज नॉट आर स्क्वायर ओ क्यूब. इसको कैसे रीड करते हैं, R2O3. ओके, और ये यहाँ पे आर का क्या मतलब है, वो तो हम लोग को पता है, राइट? ओ इज ऑक्सीजन, व्हाट इज आर? आर इज बेसिकली इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो और आर के यहाँ पे रख सकते हो. सो फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जगह पे, सॉरी, आर के यहाँ पे हाइड्रोजन रख दो. सो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद वो क्या बनने वाला है, H2O, राइट? सो R2O की जगह पे H2O हो सकता है, Li2O हो सकता है, Na2O हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके, सो वी सेड, राइट, कि मेंडेलीव ने क्या क्या कंसिडर किया था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद कौन सा केमिकल बनेगा, वो उसने कंसिडर किया था. For example, another example, if you want Al is what? Aluminium. So aluminium और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, Al2O3, राइट? सो आर के यहाँ पे Al रख दो, so Al2O3. If you are unable to see this clearly, you can open the textbook. Okay, textbook I think page number 18 पे ये होना चाहिए और somewhere around. So just check this table out on in your textbook if this is not clear. So if you see, Mendeleev started with hydrogen. Okay, हाइड्रोजन से शुरुआत की और फिर बाद में बीच बीच में बॉक्सेस छोड़ दिए. अभी बीच बीच में बॉक्सेस छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा गट्स लगता है. ऐसे किसे तुम लोग बॉक्सेस छोड़ रहे हो, the other scientist will question you, right, कि बॉक्सेस क्यों छोड़ रहे हो, should be able to explain that very well. So बॉक्सेस छोड़ दिए and Mendeleev was only thinking कि, so what was Mendeleev doing? Mendeleev केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी देख रहा था. सो ही नोटिस कि लिथियम का और हाइड्रोजन का सिमिलर प्रॉपर्टीज है. उसने इतने सारे बॉक्सेस खाली छोड़ के उसको नीचे लिख दिया. ओके, whereas Newlands क्या कर रहा था, Newlands had written hydrogen here, lithium here, sodium here, so he did not leave any boxes. So that is how Mendeleev's periodic table is more superior, is better, okay, than Newlands, क्योंकि बीच बीच में boxes छोड़े. Also, a few interesting things to note in Mendeleev's periodic table. Okay, if you see यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक डैश डाल के 44 लिख दिया है, फिर यहाँ पे भी डैश डाल के 100 लिख दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लिखा है. व्हाट इज दिस डैश, व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क? थिंक अबाउट इट, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू. ओके, सो व्हाट आर दीस डैशेस एंड क्वेश्चन मार्क्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल? यू हैव टू थिंक अबाउट इट, उसने ऐसा क्यों किया होगा. एंड रिमेंबर दिस टाइम इज, कब बना रहा है ये, 1870. सो 1870 में क्या हो सकता है जिसके वजह से he'll put dashes and he'll put question marks? Just think about it. Okay, I'm waiting for you all to think about it. Okay, I hope you all have some idea or you all have some guesses at least. Okay, we're going to move ahead. So these are the two questions. They are given under the title of think about it. So again, what I'm going to do is I'm going to wait for, actually let me read the questions first. There are some vacant places in Mendeleev's periodic table. Okay, कुछ कुछ खाली जगह पे. Then in some of these places the atomic masses are seen to be predicted. So वहां पे जहां पे डैश डाल के नंबर लिखा था, what was that? Mendeleev is predicting कि अभी तक ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, बट कभी ना कभी ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और जब वो डिस्कवर होगा तो उसका ये एटॉमिक नंबर होगा. हाउ कूल इज दैट कि वो प्रेडिक्ट कर रहा है. 1870 में बंदा बैठ के अगले 50-100 साल में क्या नए एलिमेंट्स आने वाले हैं और इसका क्या एटॉमिक मास होगा, ये प्रेडिक्ट कर रहा है. दैट्स अमेजिंग, राइट? यू नीड सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस टू डू दैट. सो in some of these places the atomic masses are seen to be predict कर रहा है. At least 3 of these predicted atomic masses along with their group and period. Okay, so जहां जहां पे prediction किया है you have to find those, so you'll need textbook for this. Okay, so if you don't have your textbook around, pause this video right now, take out your textbook and go to page number 18. Go to page number 18 of Mendeleev's periodic, where you will find Mendeleev's periodic table. Okay, and then play the video again. I'm going to wait for 5 seconds for you all to get the textbook. Okay, I hope you pause the video and have your textbook back. So you can see the Mendeleev's periodic table. वहां पे कहाँ पे numbers predict किए हैं.
एंड जो जहां पे प्रिडिक्शन किया है उसका ग्रुप लिखना है एंड उसका पीरियड. व्हाट आर ग्रुप्स? ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम्स, पीरियड्स क्या है? हॉरिजॉन्टल रोज. ओके, सो दिस इज योर periodic table and I want you to mark it in your textbook. Okay, mark करो textbook का question number 1 के answers को textbook में mark करो. I'm going to wait for 5 seconds, pause the video here and find those. Okay, I hope you'll pause the video and have found all the three predicted numbers. Okay, where were the numbers? I'll show that on the screen. Here are the numbers. So एक है पीरियड 4 ग्रुप 3 में, दूसरा है पीरियड 5 ग्रुप 3 में एंड लास्ट वन इज पीरियड 5 ग्रुप 4 में. सो दीज आर द थ्री नंबर्स जिसका प्रेडिक्शन कर रहा है मेंडलीव कि इसका एटॉमिक मास ये होगा जब भी वो डिस्कवर हो जाएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज due to uncertainty in the names of, okay, wait, before going on to the next question, copy the answer. This is how you are supposed to write the answer. So copy the question as well as the answer in your notebooks. Okay, I'm going to wait for 5 seconds for you all to do that. Okay, I hope you all pause the video and have copied the question and answer. Okay, next. The next question is due to uncertainty in the names of some of the elements, a question mark is indicated before the symbols in Mendeleev's periodic table. What are such symbols? So, वो जो question marks थे, that is because uncertainty in the names. नाम because again it is 1860, sorry 1870 में इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है. सो अगर समझो रशिया में बैठ के कोई एलिमेंट का डिस्कवरी कर रहा है तो अमेरिका पहुंचने के लिए टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि इंटरनेट पे अपलोड कर दे रिसर्च पेपर और पूरी दुनिया उसको एक्सेस कर सकता है. इट्स नॉट दैट इजी बैक इन 1870s. इसलिए नाम क्या है एग्जैक्टली एलिमेंट का पता नहीं था. ओके, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क डाला. सो अगेन योर जॉब इज टू फाइंड सच सिंबल्स. ओके, so again, I'll show you all the periodic table. Yes, here's your periodic table. Open your textbooks, go to page number 18, find the periodic table of Mendeleev and उसमें कहाँ पे question mark से ये mark करना है तुम्हें. Okay, again I'm going to wait for 5 seconds, pause the video to do this. Okay, I hope you all have found all of them. There were actually 5. So I don't know how many of them you all were able to find, but there were 5 and here they are. Okay. Yes, so you all can see कहाँ पे question marks है in Mendeleev's periodic table. Mark those in your textbooks. Okay, and how do you write the answer to the question? This is how. Just make a table. तो यहाँ पे सारे एलिमेंट्स के नाम है या फिर सिंबल्स है जिसपे क्वेश्चन मार्क दिया था एंड एक्चुअली उसके मॉडर्न नेम्स क्या है, मॉडर्न सिंबल्स क्या है, ये राइट साइड में दे दिया. ओके, सो यहाँ पे मेंडलीव्स के पीरियड टेबल में जो वाई था उसको एक्चुअली आज हम वाई बोलते हैं. द सिंबल इज वाई. यहाँ पे जो डी आई था उसको आज हम एल ए बोलते हैं. ओके, सो जस्ट कॉपी दिस टेबल इन योर नोटबुक्स. ओके, वी आर गोइंग टू मूव अहेड. I mean, we are done for this learning session. But before actually ending this learning session, I want to give you one assignment. Okay. Find out the names of the following elements and the pronunciation from Google and complete the table. Okay. So यहाँ पे elements दिए मैंने, उन elements के नाम ढूंढने हैं. For example, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H. और फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, कैल्शियम का सिंबल है Ca. सो अभी तुम लोग को सिंबल पता है, उसमें से एलिमेंट का नेम निकालना है. ओके, सो यू आर गोइंग टू डू दिस फॉर these 5 elements. Okay, and you will write the name of the element and you will also see the pronunciation. So if we have a meeting someday, you all should be able to pronounce these names of the elements. Okay, and how do you find the pronunciation? तुम लोग गूगल पे अगर समझो टाइप कर रहे हो y, you type in the Google y space element space pronunciation. So तुम लोग को YouTube वीडियो के लिंक्स आ जाएंगे जहाँ पे वो लोग प्रोनाउंस करते हैं उस सिंबल क्या या फिर उस एलिमेंट का नाम कैसे बोलना है. ओके, so pronunciation obviously you won't be able to write it here, but you all should know the pronunciation. You all should know the correct pronunciation of all the elements. Okay, so that's your assignment for this learning session. Okay, I don't know why I've written do not copy here. You have to copy this. This is a mistake. Okay, so that's it for this learning session. The word we learned today was correlate. Okay, so correlate matlab having some connection. If there's a correlation between two things, those two things have some connection between them. And also don't forget to make sentences out of the words we are learning. So that's it for this learning session. I hope you all enjoyed and you all learned.
something new in this learning session, and I'll see you all in the next learning session. Till then, peace.